non-alkyl substituent. Naming of non-alkyl substituents. Okay. Now, if I talk about the non-alkyl substituents, then there are two types of non-alkyl substituents. एक तो हमारे पास वो है, those we have already seen in the list of functional group, है ना? So the compounds, so the fragments which are there in the list of functional group, they can also act as substituent, है ना? उनको देखेंगे, and then we have not from the list, है ना? Others की बात करेंगे. So we have from the list of functional group, and then we have others. ठीक है? So, for example, here we have OH, and let us suppose here we have NH2. Right? So, what is the functional group in this particular molecule? Tell me, Harsha. OH. OH is the functional group, right? Unsaturation will be AN. And so let me just change the view here. Okay. Unsaturation is going to be obviously AN, and your parent chain will be these 4 carbon atoms. Now there is something left, this NH2. Now this NH2 is going to be the substituent. Okay. So we have to now NH2 is in the list of functional group, and it is also what substituent now, because we have a functional group of higher priority. That is why NH2 is not acting as a functional group, but it is acting as what? It is acting as a substituent now. You got it? Yes or no? Please tell me, Harsha. Yes, sir. From the list of functional group. Okay. So then you will write substituents from list of functional group. ठीक है. So आपको हम यहाँ पे देखेंगे structure. We'll write the structure here. और अगर ये substituent है, if it is a substituent, then what should be? How should we write its name and how should we represent it? Substituent. ठीक है. चलिए. From the list of functional group, इसमें देखिएगा please. We have COOH. Now, if COH is acting as a substituent, then we call it carboxy. Then we have SO3H. We will call it sulfo. ठीक है. Then we have COOR. We will call this alkoxycarbonyl. Alkoxycarbonyl. ठीक है. Now, if this is CH3, तो हो जाएगा methoxycarbonyl. If this R is C2H5, it will be ethoxycarbonyl. If it is C3H7, then it will be propoxycarbonyl and so on. ठीक है. Next, we are going to have after COR, we have एक हम example दे देते हैं. For example, we have CO and O. Let us suppose C2H5. तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? This will be ethoxycarbonyl. Ethoxycarbonyl. ठीक है. Then we have CONH2. If the amide group is acting as a substituent, then we will call this carbamoyl. Carbamoyl. MOYL. Then if we have CN group acting as a substituent. Previous class, do they come under alkyl substituents? Which one? Nitro, alkoxy, methoxy. अरे वो नहीं वो others वाले हैं, वो others में है. ठीक, उसको हमने बस 1-2 सवाल कराने के लिए पढ़ा दिया था. I'm going to write those also. ठीक है. CN के लिए क्या लिखेंगे? CN is going to be cyano. CYANO. ठीक है. After CN we have CHO.
CHO को या तो लिखिएगा आप ऑक्सो और यू विल राइट इट फॉर्माइल, ठीक है। वी आर गोइंग टू प्रेफर फॉर्माइल ओवर ऑक्सो, ठीक है, फॉर्माइल को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। देन वी हैव CO, है ना, दी कीटोनिक ग्रुप, तो कीटोनिक के लिए ऑक्सो होता है, कीटोनिक इज ऑक्सो। After that, we have OH. If OH is present as a substituent, then we call it hydroxy. And if NH2 is present as a substituent, then we call it amino. Then we call it amino. Done, sir. Done? अब इसके बाद लिख लीजिएगा, ये तो आपके पास सबसे पहला हो गया, दिस इज रिगार्डिंग substituent from the list of functional group. सेकंड लिख लीजिएगा, जो अदर्स थे, अदर्स में आपके पास क्या है, फ्लोरो, है ना, वी हैव क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। देन वी हैव व्हाट, नाइट्रो, NO2, ठीक है। और क्या है हमारे पास, OR। OR के लिए क्या जाता बताइए, OR इज गोइंग टू बी अल्कोक्सी, लिख लीजिएंगे, कल लिखा था हम लोगों ने ये सोनोपी सही, Yes, sir. ठीक है, सेम है। इसका लिख लीजिएगा, नाम क्या होता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, एल्कोक्सी। Done, sir. नाउ वी विल सी नेक्स्ट, एक तो रिमार्क लिख लीजिए, बेसिक रिमार्क्स हैं और ये चीजें आपको पता ही होंगी पहले से। If more than one substituent if more than one, अच्छा if more than one type of substituent कर लिया ना, अगर मोर देन वन तो ऐसा हो सकता है ना, दो बार फ्लोरीन भी आप समझ सकते हैं, तो अगर हम टाइप बोल देंगे, मोर देन वन टाइप ऑफ दैट मींस फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, वन टाइप ऑफ substituent is present, then in the name they will be written alphabetically. They will be written alphabetically. बात समझ में आई आपको ये सुनो किसी? Yes, sir. ठीक है। अब समझिए दूसरी चीज जो है, तो पहला if more than one substituent of same type is present, then we add di, tri, tetra, etc. to the name of substituent, है ना। आई होप दिस वाज नॉट वेरी न्यू फॉर यू, है ना, ये तो ऑब्वियसली बात है, आपको याद, मतलब हाँ ऐसा करना ही पड़ेगा, डाई ऐसा लिखना ही पड़ेगा ना, बिकॉज वी हैव मोर देन वन सब्सटीट्यूएंट ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। लेट मी नो इफ यू हैव रिटन दिस डाउन।
Done, sir. अब ऑलमोस्ट पूरा ही खत्म हो चुका है आपका, ठीक है, नॉर्मल फीचर वाला जो पार्ट है। तो हम कुछ आपको सवाल दे रहे हैं, ठीक है, यू ट्राई टू डू इट एंड देन वी विल बी डन, ठीक है। सो प्लीज राइट अ क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट डन हुआ है, थोड़ी सी चीजें बाकी हैं अभी भी। राइट IUPAC नेम फॉर फॉलोइंग। Sir, in the first one for numbering, can we take the terminal carbon next to NO2? I think this will be a terminal carbon, right? Yes, sir. हाँ, this also, हाँ, तो यहाँ पे दो ही तो है। आई होप दिस फिट्स इन द डेफिनेशन ऑफ टर्मिनल कार्बन, राइट? कार्बन Yes. एटम जिसकी एक साइड में ही क्या हो, कार्बन एटम्स हो, ठीक है।
You will send me once you're done. Okay. Okay. Patient. See. Three hydroxy, one nitro. S would come before nitro, yeah, correct. And a 2 on, yeah, that is correct, very good. And then we have, you messed up now. Nitro is not a functional group, right? Harsha, Yeah, so I forgot. है ना? Yeah, उसको ठीक कर लीजिए बस. Other than that, second, जो third वाला है आपका, वन टू थ्री, हाँ ठीक है, बी आर की तरफ आपने किया है, वेरी गुड. आपने करेक्ट कर लिया सेकंड वाला. Will it be हर्षा, 3 nitropentane?
3 नाइट्रो डाइईन में आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी ना, नंबरिंग भी नहीं किया आपने डाइईन में। डाइईन में आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। आप उसको करेक्ट करके एक बार भेजिए, ठीक है ना। Okay, sir. So the third one, is it correct? What I sent? आप थर्ड वन आपको सही है, थर्ड में कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई थिंक इट इज करेक्ट। 2 1 1 ओन है आपके पास। साइक्लोहेक्स होगा बस वहां पे, आई थिंक आपको लिखा होगा साइक्लोहेक्स होगा। Yeah. So we can number in any way, even if they are नहीं different नहीं नहीं sections नहीं or groups. नहीं नहीं, आपने जो नंबरिंग किया वो ज्यादा सही है, ठीक है। बिकॉज इफ यू रिमेम्बर, थोड़ा इसी वजह से ये सवाल को दिया था, दैट पीपल जनरली डू सम मिस्टेक्स हियर, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली द नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन एटम, दैट इज द फर्स्ट कार्बन एटम विल बी दिस ओन, है ना, सही है। Gotcha. अब उसके बाद 2 3 4 5 6, दिस इज द वे ऑफ नंबरिंग। और हम क्या कर सकते हैं, आई कैन हैव 1 2 3 4 5 and 6। Now, if I see the red one जो आपने किया है ना, तो रेड वाले में क्या है, द गुड थिंग अबाउट द रेड वन इज कि आपके पास जो ब्रोमो आ रहा है, ब्रोमो इज गेटिंग विच नंबर 2 ब्रोमो, और फिर आपके लिखा क्या लिखेगा 6 क्लोरो। बट जो ब्लू वाला है उसमें आएगा आपके पास 6 ब्रोमो एंड 2 क्लोरो, ठीक है। बोथ ऑफ दीज आर दे सीम इक्विवेलेंट, लेकिन हमने एक बात लिखाई थी कि अगर जहां पे भी टाई हो जाए ना, जहां पे भी टाई हो जाए, देन वी विल नंबर इट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो बी आर को नंबर पहले करेंगे, उसके बाद सी के पास जाएंगे। मेक सेंस, यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. ठीक है, चलिए। नाइट्रो वाला दोनों ठीक करके भेजी, एंड आई एम गिविंग यू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस।
Did you send the answer, Harsha? Yeah, sir. You have sent me. Okay. Function group में E होगा ना? Harsha, it will be E in the function group, right? Okay, Harsha? yeah. Yeah. E ने लिखा आपने 1,4 ठीक है 24 ठीक है सही ठीक है इनको कीजिए सर
By the way, Harsha, you will let me know if you have any doubts, okay? Yes, and Yeah, send it. Uh, इन द D1 जो आपने D1 लिखा है ना, उसमें देखिए जो सब्स्टिट्यूएंट है आपका, दैट इज अ रिंग, राइट? yes, तो साइक्लोहेक्साइन हो जाएगा, okay, है ना? ठीक है। और उसके बाद ई वाले स्ट्रक्चर में आपने सीख किया 1 2 3 4 ऑल एन ब्यूट टू इथाइल ब्यूटेन बना, वेरी गुड। And one is starting from there 1 2 3 4 5, yeah, very good. Diol 2 comma 4 in, very good, you remember the in. And then we have one bromo also, yeah, very good, that's fine, correct. so the numbering should be also done near to the substituent, right? Sorry, Like in the last one, sir, if we do it from the other side, will it be sixth wrong? one, sixth one. Yeah. हाँ, तो सिक्स में देखिए एक्चुअली देयर इज अ टाइम बिटवीन द फंक्शन ग्रुप, राइट? अगर हम ऐसे करें 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, और हम इधर से करें 1 2, सेम कलर हो गया क्या? If I do something like this 1 2 3 4 5, so obviously I am getting 2 and 4 in the case of the blue one, or 2 and 4 in the case of the pink one also. That means functional group is not able to decide. सही है, functional group is not able to decide that किस तरफ से करें numbering. Functional group के बाद कौन decide करता है? Double bond. If not, then triple bond. If not, then the substituent. If not, then the alphabetical order. You're getting my point? Yes. है ना? So in this case, the substituent is deciding where we are going to have the numbering, है ना? Which one will be correct? आपका numbering सही? Got it? So I hope you can see that. मतलब भले ही you can have many cases and scenarios, but I hope you can see that everything is covered in the notes, right? कि कहीं भी आपको doubts अगर आ रहे हैं, तो you if you read that topic ना, that particular topic, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब I wanted to like move the syllabus, but अब ये है एक बात कि बच्चे हैं नहीं, है ना? So I'm really thinking like what should we do? आज आप अकेले हैं, अगर 2 3 बच्चे भी रहते तो कम से कम कुछ आगे सिलेबस को हम ले जाते हैं, क्योंकि फिर प्रैक्टिस ही करते हैं, and then we'll end this class half an hour earlier, ठीक है? So in your NCERT textbook, let me see what questions are there. फिर if you have any questions जिसमें आपको doubts वगैरह हैं स्कूल में जब आपने किया हो, so you can send that here and उसको try कर सकते हैं हम लोग. Is there anything like that? No, sir. Hmm. Hmm. So like is the chapter over? नहीं भाई, ये चैप्टर भी शुरू भी नहीं हुआ है, ये तो एक टॉपिक, ये चैप्टर है लंबा, बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है? अभी ये चैप्टर बस स्टार्ट हुआ है. So we have seen that we have done a few questions from here, right? तो अब I think you can do, हमने कौन कौन सा नहीं किया था? I think ए वाला ना, ए वाला तो अभी भी आप नहीं कर पाएंगे, ए वाला हम लोगों ने नहीं किया. I think we did all F वाला कीजिए जरा, F वाला. I don't know whether you did it yesterday or not. Try this F1. But we will see this one. Do we have to draw the structure?
नहीं नहीं नहीं, ये वाला किया, एफ वाला किया आपने? No, sir. That only. एफ वाला कीजिए, हाँ एफ वाला कीजिए पहले, उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं। वी आर गोइंग टू लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस फ्रॉम एनसीईआरटी इटसेल्फ। Can you solve it? व्हाट हैपेंड? फंक्शनल ग्रुप, चलिए स्टार्ट कीजिए। फंक्शनल ग्रुप OH, सो इट विल बी ऑल, है ना? बॉन्ड लाइन में ज्यादा आसान लगने लगा अब। इफ इट वाज इन बॉन्ड लाइन इट वुड हैव बीन इजियर। हर्षा? Yes, sir. नहीं, तो ऐसा ऐसा ही मिलेगा सवाल आपको, ठीक है ना? एग्जाम वगैरह में बॉन्ड लाइन तो हम इसको यूज करते हैं बिकॉज वी कैन डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट इससे भी आपको पता रहना चाहिए क्या हो रहा है, ठीक है? अनसैचुरेशन, टेल मी, इज देयर एनी डबल बॉन्ड दैट यू कैन सी? No, sir. नहीं है ना? अनसैचुरेशन कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? AN हो जाएगा, राइट? है ना? अब बताएं आप, नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? Parent. हाँ, AN हो गया पेरेंट। पेरेंट में क्या हमारे पास कितने कार्बन एटम दिख रहे हैं? 2 कार्बन एटम्स। 2 कार्बन के लिए क्या आ जाता है? एथ। इन द सब्स्टिट्यूट इफ आई सी देयर आर 2 क्लोरीन एटम्स। 2 क्लोरीन एटम्स के लिए क्या हो जाएगा? डाइक्लोरो, ठीक है? If I number it, so obviously numbering will start from the parent, ये वाला carbon atom which is having the OH, so this is 1 and this is 2. And dichloro में क्या हो जाएगा? It will be 2,2 dichloro. सही है? Because both the chloro atoms are in the second carbon. ठीक है? Yes. चलिए एक बार ट्राई कीजिए। Write the name. So you will be 2,2 dichloro ethane 1 all, है ना? ये 1 all कर लेंगे तो ठीक है। चलिए इनको देख लेते हैं हम। Which of the following represent the IUPAC name of for the compounds considered? The correct IUPAC name, ठीक है ना? तो इन IUPAC names में ना कुछ मिस्टेक्स हैं, आपको मिस्टेक्स ढूंढने हैं। समझ में आई? एक बार रीड करें आप सवाल को, है ना? एक बार रीड करें सवाल को, देखिए जैसे पहला वाला सवाल है ना, द करेक्ट करेक्ट 2,2 डाइमिथाइल पेंटीन, 2,2 डाइमिथाइल, क्या अपन से लिख रहे हैं हम? डाइमिथाइल पेंटीन, ठीक है ना? अच्छा, कैन यू मेक द स्ट्रक्चर 2,2 डाइमिथाइल पेंटीन का? उसके लिए हम बता रहे क्या करना। सबसे पहले ना आप लीजिएगा पेंट। पेंट के लिए 1 2 3 4 5 एंड 2,2 डाइमिथाइल, तो आप सेकंड कार्बन एटम पे CH3, सेकंड कार्बन एटम पे CH3, इस तरह से लिख सकते हैं, राइट? देखिए एक बार, मेक सेंस? यस और नो? टेल मी। Can you repeat? आई एम सेइंग दैट कैन यू आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन? नाम में से पेरेंट कौन सा होगा? Pentane. पेरेंट इज द पेरेंट, राइट? सो यू विल मेक 5 कार्बन एटम्स। 5 कार्बन एटम कर दिया आपने, ठीक है? देन यू विल नंबर इट 1 2 3 4 5, जैसे भी नंबर करना आप नंबर कर लीजिए, ठीक है?
उसके बाद सेकंड कार्बन में आपको मिथाइल डालना, तो यू विल ऐड 2 मिथाइल हियर, CH3 एंड देन CH3. गॉट इट? Yes. ठीक है. सो एज यू कैन सी आपको ये स्ट्रक्चर सही सही मिल गया. सो दिस इज गोइंग टू बी फाइन. आप इसको अगर नेम करना चाहें इट विल बी द सेम. ट्राई द नेक्स्ट वन. ड्रॉ द स्ट्रक्चर एट लीस्ट. द अदर वन. देखिए क्या ये सही है, बताइए जरा. डज द नेम, ओ अच्छा यहाँ पे और लिखा हुआ है. ओके माय गॉड, आई डिड नॉट, आई थॉट दिस इज अनदर क्वेश्चन. ठीक है, एक बार सवाल को देखते हैं. सही है. उन्होंने पूछा है 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन सही है या फिर 2 डाइमिथाइल पेंटेन सही है. ऑब्वियसली यू कैन सी अगर डाई लगा हुआ है तो 2 नंबर्स होने चाहिए. करेक्ट है हर्षा? Yes, sir. है ना. तो ये गलत है और ये वाला सही है. देन वी हैव 2,4,6 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन. ट्राइमिथाइल ऑक्टेन. और दूसरा आपके पास 2,5,7 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन. ठीक है. अब इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक द स्ट्रक्चर. ठीक है. स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखते हैं. सो ऑक्टेन है दोनों. हियर वी हैव मिथाइल एंड हियर आल्सो वी हैव ट्राइमिथाइल, राइट? राइट. देयर इज नो डिफरेंस. ठीक. सो 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Right? We have 8 carbon atoms. अगर हम पहला वाला स्ट्रक्चर बनाए तो विल नंबर इट फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ठीक है. तो इस केस में 2 4 7 CH3 CH3 and 7 CH3. ठीक है. और दूसरा हमारे पास क्या 1 2 3 4 5 6 7 8. and then we have 2,5,7 CH3 CH3 and CH3. ठीक है. अब इसमें से अच्छा स्ट्रक्चर दोनों सेम ही है क्या, आपको दिख रहा है? द स्ट्रक्चर इज सेम. कैन यू सी इट हर्षा? अब इसमें से बताइए नाम असल में होगा क्या है इसका. ठीक है. सो देखिए एवरीथिंग इज सेम. ट्राइमिथाइल वगैरह सही. नंबरिंग में बस यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो जा रही है. नंबरिंग में होना क्या चाहिए, नंबरिंग में होना चाहिए आपके पास हाउ शुड बी नंबर इट, दिस वे या दिस वे, ए और बी. कैसे नंबर करना चाहिए आप बताएं. A. ए, राइट. ठीक है. तो आपके पास हमारे तो जो था 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ठीक है. इस हिसाब से हमारे पास था 2,4. और अगर हम उल्टा चलते हैं, ग्रीन ले लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 and 8. तो इसमें से ब्लू वाली नंबरिंग सही है, राइट? करेक्ट. Yes. That means the numbering should be 2,4,7 and not 2,5,7. ये गलत है और ये वाला सही है. Got it? So is it because it should be the number should be less? हाँ, number should be less. and हमारे पास देख एक सेकंड, what is the criteria that we have. अगर functional group वगैरह नहीं है तो numbering will be done on the basis of subsequent, right? Yes. करेक्ट है. अब देखिए हम लोग अपने हिसाब से नंबरिंग करते हैं तो उससे वो तो एक देयर इज अ रूल दैट इज नोन एज लोवेस्ट लोकेंट रूल. बट आई जनरली डोंट सजेस्ट फॉलोइंग बिकॉज उससे थोड़ी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ जाती है. ठीक है. एज वी कैन सी दैट ना ही वी हैव फंक्शनल ग्रुप, ना ही वी हैव डबल बॉन्ड, ना ही वी हैव ट्रिपल बॉन्ड. वी हैव टू डील विद सब्सिक्वेंट. सो इफ आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट पार्ट आई एम गेटिंग 1 2. और अगर हम इधर से भी नंबरिंग कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है 1 2. सही है. Yes, sir. है ना. बोथ दी एंड्स है ना. if I start from A terminal or the B terminal, in both the cases I am getting CH3 on what, in the second carbon atom.
यानी कि this CH3 is not going to decide, these CH3 are not going to decide where should we start numbering from, है ना, because both of these CH3 are getting the same number. Correct है हर्षा? Yes, sir. So which CH3 now, what is going to decide the numbering? This CH3 is going to decide the numbering. Now this CH3, it is nearest to A terminal of the B terminal. A terminal. बात समझ में आ गई? Yes. So we'll start from A terminal. ठीक है? Yeah. Try this one now. 2-chloro-4-methyl pentane और 4-chloro-2-methyl pentane, ये बताइए आप. पेंटेन में 1 2 3 4 5 हो जाएगा, एंड विल हैव Cl हियर, एंड 4 में आपके पास CH3 हो जाएगा. ठीक है, अब बताइए विच नंबरिंग इज करेक्ट? सेकंड नंबर जो है क्लोरो को मिलना चाहिए या मिथाइल को मिलना चाहिए? टेल मी हर्षा. मिथाइल. नहीं, क्लोरो को ना, बिकॉज C से स्टार्ट हो रहा है क्लोरो. ओके सर. गॉट इट ना? बात समझ आ रही है? ठीक है. यस. Chloro should get the least lesser number because the numbering will start from that terminal carbon atom. अभी हम दोनों टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, देखिए फिर से आप मतलब यू हैव टू, मतलब अभी तो हम आपको सीधा बता दिए क्लोरो, लेकिन एक्चुअली मेरे दिमाग में जो चल रहा होता है वो ऐसा चल रहा होता है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई आइडेंटिफाई, अब दिस इज नाउ हैज बिकम अ हैबिट, है ना, दैट इज व्हाई आई कैन आंसर वेरी इजीली. बट ये आपको दिस प्रोसेस यू हैव फॉलो ऑन टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द ए. आपको फर्स्ट सेकंड कार्बन में यू गॉट अ सब्स्टिट्यूएंट, देन यू ट्राई फ्रॉम बी. First, second carbon may got a substituent. So obviously the position of substituent is not a matter. Now we have to go through the alphabetical order. So this is chloro and this is methyl. So obviously chloro will get the priority और chloro की तरफ से हम लोग numbering start करेंगे. बात समझ में आई?